अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
Assalamu alaikum, everyone. Let's Walaikum start the program. Because Aman is coming first, so let's start with the Aman. So my name is Dr. Nafeesa Bano, and I am head of quality assurance in Aman healthcare system. So Aman healthcare's ecosystem focuses on just a minute. Hello. Hello. चले जी. So we have started. As I told, my name is Dr. Nafeesa Bano. I am heading Quality Assurance Department of Aman Healthcare. Aman Healthcare System जो है वो actually best in class preventive, primary and emergency healthcare services provide करता है to the citizen of Karachi and Sindh. अमन हेल्थ केयर सर्विस एफिलिएटेड है तकरीबन 2018 से गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ. We have our two programs. One is Sindh Rescue and Medical Services and another is Sindh People Ambulance Service. जो सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विसेज का प्रोग्राम है वो कराची में सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ऑन द अदर हैंड जो स्पास यानी कि सिंध पीपल्स एम्बुलेंस सर्विसेज का प्रोग्राम है वो सिंध में ठट्टा से जावल और हैदराबाद में सर्विसेज प्रोवाइड करता है. वी हैव अराउंड 300 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं और 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज ए फ्रंट लाइन वर्कर्स. तो इस तरह से अगर हम कहें कि हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं वो फुली इक्विप्ड हैं, वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पे रन की जा रही हैं, उनके अंदर जो है वर्ल्ड क्लास किस्म का जो है एमरजेंसी लेटेस्ट एमरजेंसी इक्विपमेंट से वो फर्निश्ड हैं. उनमें मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स रखे हुए हैं जैसे कि पोर्टेबल वेंटिलेटर हो गया, कार्डियक मॉनिटर है, इसके अलावा जो AED मशीन्स होती हैं कि आर्टिफिशियल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स वो भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि पेशेंट्स को जो है वो ऑन स्पॉट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके. क्योंकि पेशेंट्स जो हैं जिन पेशेंट्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है और उनको एज अर्ली एज पॉसिबल हमें जो है वो किसी सेफ प्लेस पे उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है और ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन वी प्रोवाइड सर्विसेज टू सेव देयर लाइव्स और एटलीस्ट टू बाय सम टाइम कि उनको किसी एडवांस मेडिकल सेंटर में प्रोवाइड किया जा सके. तो इस सारे जब जहाँ तक आपकी पेंडेमिक की बात है और जहाँ तक पेंडेमिक की बात है तो पेंडेमिक जो है वो ऑब्वियसली वाकई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी. इसमें जो है हेल्थ केयर सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो एसेंशियल सर्विसेज जिनको आप स्टॉप नहीं कर सकते. जैसे अगर प्रोडक्शन है तो देखिए प्रोडक्शन को आप स्टॉप कर दें, मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो आप मैन्युफैक्चरिंग को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं, मगर जहाँ तक एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज का ताल्लुक है तो उनको स्टॉप नहीं किया जा सकता. और जहाँ तक कोविड की पेंडेमिक की बात है तो वहाँ तो और ज़्यादा जो है वो हमें फ्रंट लाइन पे आकर जो है वो इससे फाइट करना था. तो उसमें हमें ऑब्वियसली हमें चैलेंजेस मिले और उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उनको किस तरह से मोटिवेट रखा जा सके, क्योंकि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और एक ह्यूमन फैक्टर के तौर पर उनके पास भी वही इश्यूज आ रहे थे, यानी कि उनको भी एक एंजाइटी थी, एक खौफ था कि ये कोविड के पेशेंट ऑल्दो के जो दूसरे सेक्टर के लोग हैं वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं ना पेशेंट के साथ,
यहाँ तो ये केस था कि हमें पता था कि जी ये पेशेंट जो है ये कोविड पॉजिटिव है, जिसको हम उठाकर लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में। और फिर जितना टाइम हम एम्बुलेंस में उसके साथ बैठे हुए, तो हमारा मुसलसल इंटरेक्शन हो रहा है उसका कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ। ना सिर्फ उसका साथ इंटरेक्शन हो रहा है, बल्कि उसको हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम उसको जो है वो टच भी कर रहे हैं, उसको उसकी जो है सिक्रीशंस हैं तो उसको साफ भी कर रहे हैं, उसको जो है वो केयर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सूरत में उनको ये जो खौफ था कि हम इन्फेक्टेड होने का चांस जो है वो कई गुना बढ़ गया था। इस सूरत में हमने इस सारी सिचुएशन से डील करने के लिए सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की। उन ट्रेनिंग्स के अंदर हमने उनको ये बताया कि कोविड किस तरह से स्प्रेड होता है एंड हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि वो ले सकते हैं अपने आप को और अपनी फैमिलीज को सेव करने के लिए। तो इस तरह से उनको हमने ट्रेनिंग दी। फिर हमने यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स के ऊपर उनकी ट्रेनिंग दी, जिसमें उनको बताया गया कि अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो आप जो है खुद को सेफ रख सकते हैं और सेफ रखते हुए सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें। इस तरह से उनको हमने ट्रेनिंग के हवाले से, जैसे अगर हम कहें तो हमने उनको ना सिर्फ ये कि अवेयरनेस दी कोविड के बारे में, बल्कि उनको इस बारे में भी ट्रेनिंग दी कि हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू गेट इन्फेक्शन। और इसके अलावा हमने उनको मटेरियल एंड इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया, जिसमें कि हमारी एम्बुलेंसेस के अंदर आप देखें तो छोटे बेसन लगे हुए हैं जिसमें रनिंग वाटर है, लिक्विड सोप है, ताकि वो हैंड वॉशिंग जो है वो प्रॉपर करते रहें और फ्रीक्वेंटली करते रहें। हर इंटरवेंशन के बाद वो अपने हैंड वॉश कर सकते हैं विद इन एम्बुलेंस। इसके अलावा हमने उनको जो है वो जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ जो गियर्स आते हैं ना, जो सूट्स थे वो प्रोवाइड किए। इसके अलावा जो है सैनिटाइजर्स वाफर मकदार में दिए। इसके अलावा मास्क प्रोवाइड किए। ये तो बेसिक चीज़ें थी, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारी एम्बुलेंस को, पूरी एम्बुलेंस को डिसइंफेक्ट किया जाता है। हर पेशेंट जब ट्रांसफ़र होता है तो उसके बाद एम्बुलेंस की सफाई होती है, और वो सफाई नॉर्मल सफाई नहीं होती, बल्कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो उसके मुताबिक हम उनको जो है वो सफाई करते हैं। और हम सोडियम हाइपोक्लोराइड एक सोल्यूशन होता है, जिससे पूरी एम्बुलेंस, उसकी इक्विपमेंट और हर सरफेस को जो है उससे वाइप किया जाता है, ताकि जो दूसरे आने वाला मरीज और हमारा स्टाफ दोनों सेफ रह सकें और सर्विस प्रोवाइड कर सकें, और उसमें कंटिन्यूएशन डिसकंटिन्यू ना करें सर्विस को। हम लोग दो किस्म की डिसइंफेक्शन करते हैं, एक इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन करते हैं और एक हमारी यहाँ ये हाई लेवल डिसइंफेक्शन होती है। जब भी कोरोना का पेशेंट हम लेते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं और सर्विसेज देते हैं, तो फिर हम हाई लेवल डिसइंफेक्शन की तरफ जाते हैं। हाई लेवल डिसइंफेक्शन के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से पूरी जो एम्बुलेंस है उसको वॉश किया जाता है। उसके बाद जितने भी इक्विपमेंट और वो हैं उन सबको से वाइप करके और फिर दोबारा से उसको ड्राई करके उसको फिर हम वापस ऑन रोड लेके जाते हैं। जहाँ तक ट्रेनिंग और इसका सवाल है, ये तो चले एक तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ एक मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट था। हमारे एम्प्लॉयज़ भी, जैसे कि हर ह्यूमन बीइंग उस खौफ व हिरास फैला हुआ था, इसी तरह ऑल्दो कि हमारे लोग पैरामेडिकल स्टाफ और जो है नर्सिंग स्टाफ हैं, इसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, ये लोग भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो इनके ऊपर भी वही खौफ और वही एंजाइटी थी और जो इनकी मेंटल हेल्थ को जो है वो इम्पैक्ट कर रही थी। इसके लिए हमारे पास जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमने हायर किए हैं। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इनकी काउंसलिंग करते थे, जो कि ग्रुप में भी काउंसलिंग की जा रही थी और इंडिविजुअली वन-ऑन-वन सेशंस भी प्रोवाइड करे जा रहे थे, ताकि उनको जो है उनको वेंट आउट करने का मौका मिले। उनकी जो फियर्स थे या रिजर्वेशंस थी या उनकी कंसर्न्स थे, उनको वो बैठ के सुनते थे और उनको फिर प्रॉपर गाइडेंस दी जाती थी कि देखें अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन ये है, अगर ये प्रॉब्लम आप सोच रहे हैं कि हो सकती है तो इसको आप इस तरह से डील कर सकते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा मैनेज किया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारे इस काम से बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हमने डे एंड नाइट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और अभी तक हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स हैं, उनमें किसी ने भी इस तरह से मतलब बिहेव नहीं किया कि हम काम नहीं करेंगे। बल्कि हमारे को ऐसा वक़्त भी आया जब हमारे लोगों में कुछ लोग जो है वो कोरोना से पॉज़िटिव हो गए। अब जब कोविड पॉज़िटिव पेशेंट हो गए तो ऑब्वियसली उनको 14 डेज़ की क्वारंटाइन में जाना था। अब इस दौरान में जो दूसरा स्टाफ था हमारा, उन्होंने डबल ड्यूटियाँ भी की। और बिल्कुल उन्होंने किसी चीज़ में भी पीछे नहीं हटे और बहुत अच्छे तरीके से काम किया। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि हम अपनी कमिटमेंट को पूरा कर सके। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dr. Nafeesa. I hope you all can hear me. Yes, we can hear you. Okay, great. So, can you let us know that now we are entered into the third wave of the COVID regime, and this pandemic is still continued. So, इंटरनेट का कोई इशू लग रहा है मुझे, आप थोड़ी देर बाद फिर ट्राई कीजिएगा। असल में कुछ ये आपको पता है कि जो इंटरनेट है और जो टेक्नोलॉजी है उसके अपने कुछ इश्यूज हैं। सो इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा आज हो गया। अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है? नहीं, हम तो बेसिकली सेल फोन पे बात कर रहे हैं, इसलिए शायद आप मुझे बड़ा क्लियरली सुन। We can hear you, फरहान साहब। देखिए मेरी आवाज अब आपको क्लियर आ रही है? आप ट्रांसमिट हो रही है वॉइस? मिस फरहाद, am I audible? यू आर ऑडिबल टू मी। मैं आपको सुन सकता हूँ, मैंने इसलिए अब सेल फोन ड्रॉप कर दिया। आई कैन हियर यू। तो साथ में शुरू करा देते हैं, है ना? अब वो मिस फरहत चली गई। इसमें यहाँ लिख दूँ मैं, इसमें है
Assalamu alaikum, Saad. Can you start your presentation? I think he cannot hear us. I sent him a message. जी नहीं मेरी बात हो गई है, लेकिन वो गायब हो गई। Okay, meanwhile we fix these issues. Let me ask a question to Dr. Nafeesa. Nafeesa, since you know that we all are operating in online atmosphere and our students are completely online, some of the departments partially working at SZABIST. So what would you suggest to be more careful about health and safety in this existing COVID pandemic for universities like SZABIST? तो यूजुअली तो अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। इनिशियली प्रॉब्लम थी जब लोगों को पता नहीं था और लोग जो है वो ज़्यादा जो है चीज़ों को मतलब डर और खौफ बहुत ज़्यादा था लोगों में। लेकिन अब तो विद द टाइम जो है वो काफ़ी लोगों को समझ आ गई है और इसके अलावा जो इदारे हैं उन्होंने भी बहुत इसमें एफर्ट्स लगाए हैं जिससे अवेयरनेस जो है वो अब तो हर बच्चे को पता है कि जी कोविड कैसे फैलता है और हाउ यू कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। तो जहाँ तक यूनिवर्सिटी के ताल्लुक है या स्टूडेंट्स का ताल्लुक है तो आई अप्रिशिएट दोस्त जिन्होंने ऑनलाइन जो है वो सेशन स्टार्ट कर दिए विदाउट इंटरप्शन। तो मुझे ये बेस्ट स्ट्रैटेजी लगती है। इसमें ये है कि स्टूडेंट्स को जो है वो इतना ज़्यादा गैप को नहीं मिला, वरना कुछ ऐसे भी स्कूल एंड कॉलेजेस हैं जैसे जिन्होंने बिल्कुल मतलब वो ट्राई भी नहीं कर पाए ऑनलाइन सेशंस को, या तो उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं थी या उन्होंने ट्राई नहीं किया या विलिंगनेस नहीं थी। लेकिन ज़्याबिस्ट और इस तरह के और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि और कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए मतलब साल ज़ाया नहीं होने दिए और ये ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक जो कि आप लोगों ने ऑप्ट किया है। और इसमें ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी के तो इश्यूज होते हैं जो कि हमेशा नहीं होते, समटाइम्स होते हैं और समटाइम्स नहीं भी होते, लेकिन इससे काफ़ी जो गैप है वो फिल किया जा चुका है और किया जा रहा है। तो मैं तो इसी को मतलब रिकमेंड करूँगी कि ये अच्छा तरीका है। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सेव भी हो जाती हैं, जैसे कि टाइम बहुत दफ़ा सेव हो जाता है बच्चों के जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है
टीचर्स के लिए भी है और उनके लिए भी है। ऑन द अदर हैंड ये कुछ चैलेंजिंग भी है, जैसे कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो कि हम अभी फेस कर रहे हैं जिस तरह से, तो ये अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। That can be a problem. या तो इस लिहाज से मतलब ये एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन जाना इज मोर सेफर देन अदर ऑप्शन। जी फरा। Assalamu alaikum. Can you see my screen? Walaikum assalam. Yes, we can see you. Yes, and we can see you. Saad, we can see. Is my screen visible? Hello. जी साद आपकी आवाज आ रही है। Yes, we can hear you. Okay. So just an overview of what I am presenting is an overview of what we have been doing in ESF with respect to sustainability and EHS. It's a short presentation, just giving you an idea how BSF globally and in locally we are ensuring that EHS activities remain embedded in our operations. So just before start of that overview, it's a short overview of myself. It's my profile. I've been associated with the industry within production and EHS for last almost 15 years, and started my career in production, and now looking after EHS from last 5 years. Uh, Pastly, I have been in different role with project management, production, as I have mentioned, and already I've been having the opportunity to inculcate EHS within the region as well. I have been a part of the regional team where we have implemented EHS management system, and the main team member. I was responsible for ensuring EHS in the South Asia. So this is my background. I've been from educational background. I'm an engineer, a chemical engineer. I've also done my MBA in supply chain. Few relevant EHS certifications, which includes NIBOSH, IGC, IOS Managing Safety, and other lead auditor courses from ISO 9001 and 18001 that has been done by me. So this is a short profile of mine. When it talks about the BSF, BSF is it's an organization that has been there for more than 150 years. We have celebrated 150 year celebration. I think more than 5 years back. It was 2016, so it's more than 55 years old company. BSF is a German-based company, and it's been located in around 90 different countries around the world. So with the main our global office located in Ludwigshafen, Germany. Uh, so far, our structure is like that. We have been divided into two major hubs. One is located in Malaysia, that is controlling the Asia and supporting, and the other one is located in North America, which is looking after Europe and America. So as the global office sits in Germany, which operates for the for the Europe. So this is how we have been structured now with the new changes that we have. If I talk about, so these are the figures that are a bit older. These are the figures of the 2018 that are higher. Uh,
the sales values that BSF as a global had is like 62.7 billion euros business we inculcate. Our main business includes chemical business. It includes. I'll show the different categories of the chemical with details. If you talk about the in type of chemicals we are in textile. We are supplying chemical for pharmaceutical. We are supplying chemical for construction industry. We are supplying chemicals for paint industry. We are supplying chemical for home industry, home care, healthcare. You name an industry where BSF is now working. Even we are supplying chemical for electrical cars and automobiles as well, even jet planes and everything. So BSF is all around with when it comes to chemistry. That is why our slogan is like we create chemistry. So we talks about the innovation, and we talk about like producing new chemistry, helping our customers and developing a new innovative solutions for the customers. So like as I mentioned, if we talk about our sites, we have got six Verbon sites. Verbon is a concept where it is an integrated, backward integrated plant where the raw material of each you can say unit is being the byproduct of the other unit. So it is total reconnected or recycled unit where for example, if we have a cracker, so one output generated from that cracker it goes into the other industry, which becomes we do value addition on that and produce a new synthesis. Synthesized product and produce something else. For example, petroleum product are generated from for example, from the oils, byproduct of oil, petroleum, plastics, and all those chemicals have been produced. There are other chemicals that has been derivatives of chemicals are produced that are further used within the industry, and with the value addition we produce naphtha and all those things that is being used by other industries as a raw material. So the Verbound is a concept where we have got integrated side, backward integrated and forward integrated side, but there are other 355 other production sites which are specialized with like formulation units and different synthesis units that are product specific. For example, a hydrosulfide, if sodium hydrosulfide has to be manufactured for a textile industry, then it is to be produced in certain industries. Similarly, construction chemicals need to be produced in certain industries inside. So these are located in around 355 sites around the world. We are serving 90 across 90,000 customer across the world. Which are, if you name a big customer, so you will find almost all big customer in the list of BSF. We have been serving those customers. So if you divide our chemical, so if you see our chemical would be in a would be like this. We have divided our chemicals into these seven categories. Chemicals, where we talks about the petrochemicals and intermediaries. These include monomer, the basic uh, uh, inorganic chemicals and petrochemicals. Then we have got performance material. Performance materials deals and monomers deal with mainly with the foam industry, with our automotive industry. Then we have got industrial solution where we have got paints, coatings, like pigments that produce pigments in some specialized solution uh, uh, like fibers and all those things that falls into this category. Then surface technologies are main for with the surface surfactants, coatings and catalysts that regulates the production activities and ensure the generations of different chemicals. Then we have got nutrition care, where we this nutrition and care is more of is related with the pharmaceuticals and care industry, where healthcare segment like hygienic.
the material required for producing for soap, detergents, hand sanitizer, perfumes, aerosols, and all those things has been produced in this sector. Agriculture and solutions. This include definitely crop protection and seeds, seeds business, and all those chemicals that are acted as a raw material for this industry. They are catered in this segment. Then there are other segment as well where we talk about the oil and gas, which are very niche market to us because we don't sell oil and gas, but we do produce some additive for oil and gas that has been treated in the refineries, and also in the end user product like we have been providing chemicals to increase the octane number to our local industry like Shell and PSO. Uh, Construction chemical. This is recently divested from BSF in 2019, but this used to be one of our business where we were producing chemicals related to in to increase the strength of the construction material. This was that segment. So moving around BSF in Pakistan, we have been there for like more than 50 years. BSF was there and serving like I think in Pakistan we were known for a cassette producing company where we used to produce cassettes. Then afterwards we have been known for our plant in export processing zone where we used to produce textile chemicals. Then in recent decade, were one in construction chemicals, and now, as I've mentioned, that our total business is on merchandise and indent, and we are working on almost all chemicals industries except construction now. Uh, since it is divested last year, so our presence in Pakistan is in Karachi, Lahore, and Islamabad, where our production facility is in Karachi. With respect to our business, it's around local business is around 102 million euros in Pakistan, and it is the net sale that we have, and we have been awarded like in 2017 the chemical best placed at work in 2017 in a chemical sector by different service awards. This is our landscape that I have mentioned. That we have got offices in Karachi, Lahore, Islamabad. Our production facility is located in Karachi, near export processing zone, in the same area where we used to have our textile business. We still operating. We are still operating by sharing that site. A part of it is still belongs to BSF, and we've been there. Other than this, we have got warehouses that are the third-party operated warehouses. The Connect Logistic is our third-party logistic provider, and we have been associated with them in Karachi, Lahore, and Islamabad. Rest, if you talk about the sustainable target that we have as a global BSF is like that we are aiming to reduce the lost time injury by zero point 0.1, less than zero point 0.1 per 200,000 working hours. This is the target that we have. If you talk about this would be the global target, not from the only for Pakistan. So you mean that zero point 0.1 point 0.1 is still a good number. The last year we had few injuries. Previous year we still have the few injuries because we are operating like around 90 countries, three more than like 355 and 355 and 6 per burn site. Uh, so this number is still a challenge for us, but we are hopeful that with our processes we can get to this number. The other sustainable targets includes process safety incidents. Again, the target remains the same that we want process safety target to be less than zero point 0.1
per 200,000 working hours. Process safety incident, if I elaborate what is the difference between the incident, lost time injury, and the process, it would be a fundamental incident which involves fire, spills, and catastrophic fire spills, and a large scale, more than one LTI or fatality cases. So these falls into the process safety, the disastrous. We could easily, for a layman, it's a catastrophic incident or the disastrous incidents in the industry. So generally, it scales in point one. Per 200,000 working hours. So the other target that we are carrying is the waste management. We are our targets are continuously to ensure that our waste, we move to our local site, we should move to a zero zero discharge plants. So we are trying our focus is that by 2030 we will develop our processes and then reuse our waste within the BSF community, so that we will be a zero discharge facility, where especially the effluent should be reused, where be within within the BSF entities. And for other waste, we are also providing solution to the community by producing innovative chemicals, especially biodegradable materials. We have been working with Pakistan government as well, and especially with the Punjab government to produce one of our chemicals, to use one of the chemicals in a polybags, that would replace the current so-called biodegradable bags, because we say that these bags, which are currently used as a biodegradable bags, is still carry some risk of that they do not degrade as they claim. So we have got our own product. Definitely, it has a cost involved with it. So government is working and pushing. We have been providing the samples to the customers so that they can experience that material and see the valuation they could get with this product. On the other side, we have got the target with respect to carbon footprints. Definitely, it's been a target to neutrally. We are keeping a target that at this point of time we have started evaluating a carbon footprint for each site. We have been reporting it, and definitely in a future to come. And on the line of this, we are also our global team has made it mandatory for each organization to get the ISO 5001, which talks about energy and energy efficiencies and energy management, which also cover the carbon footprint part. So each organization is going through this 5001, and definitely we are trying, looking forward to cut down our carbon footprint, to ensure our environment and then the globe and the community remain safe. So these are our specifically, you can say, elaborated target till 2030. 2030. Within BSF Pakistan, we have been ensuring EHS within the BSF Pakistan by having these four pillars. Our foundation, our EHS is our license to operate, that will lies at the bottom of our this house at the base, which ensures that for every operation this should be remain the first priority. And when it talks about EHS, it should be given the importance, that due importance that is required. Our pillars remain with the people, where we see that EHS is nothing but it is the mind sciences, or part of a mind sciences, where the pupil has to ensure the compliance. And if the people are not trained on EHS safety,
it is not embedded in their DNA, or it is not part of their daily life, you could not get the EHS activity done at the plant and their workplace. So definitely the engagement is that we engage them by having different reward and recognition system. We involve them in hazard reporting, incident reporting. We have got target for that each employee has to report for near misses or hazard reports, at least for four hazard reports each month. We keep them motivated with the reward and recognition. We called it EHS Champion of the Month. We have campaigns where rewards and recognition is also part of those campaigns, where we have different topics on safety, health. We conduct safety campaigns and health campaigns alongside, where we take one topic and we try to produce five or six programs entire month on those top topic, and involve different category of people, right from the workers, from top management and from the middle management, to participate and to share their ideas and get acquaintance on the topic. So this is how we have been engaging people with respect to building competency. Definitely training, external trainings, internal trainings is a part of our agenda, and it will always be, because learning never gets stops. And as if we have a target of ensuring zero, goal zero, so it should be a part. It should not be achieved if we keep on learning and learning from our mistakes. So any incident, any accident taking place within the BSF is being shared with the community or with the teams, and similarly any incident within the circle, if comes across within the EHS community locally, so it's also been shared with the team. We have got internal, external, or audits, risk assessments, where we gap analysis, where we do our COPs, code of practices that we call. Then these are the actually areas where we have been working on building the competency of our team. So one of the factor that we have locally is like this. We EHS is not only the responsible for each pillar of EHS. Like we have got like 10 code of practices within BSF, 10 so it is led by each individual, uh, other than EHS, and EHS support them in the back end. So the person, the manager, or the operation leader who's leading that EHS is the actual person who is responsible to ensure the compliance of that pillar, or that code within their entire organization. So in this way, other than EHS, the people got you can say involvement, and we are also ensuring the competency of ensuring that the other than EHS, the EHS competency is also calculated into the other employees as well. uh, any management system is not complete if we do not have a PDCA cycle, where we plan, do, act, and check. If we do not do this, we could not conclude, or we could not improve our system. So definitely monitoring is there. Monthly, we have got the KPIs to report. We report those KPIs. Then there is a follow-up meetings, with review meeting each month. Our operational review meeting is been done on a company wide scale, where MD leads that meeting, and EHS is the opening session of that meeting every time when we have that meeting. So there the KPIs has been shown there and discussed. Any pending action, any overdue is being discussed, and the way forward to be decided. Uh, and similarly we have got internal and external audit. We are ISO certified company, so we also get the audit done from the third parties, and we do have internal audit teams. So we do have Gamba walk every month,
with the senior manager involved in that for our processes, warehouses, plant everywhere. We have got this to ensure that we remain safe and our operation remain compliance to our procedures. Uh, then if you talk about overall, if this is how these four pillars, people, competency, monitoring and continuous improvement, and audit inspection, we are ensuring the EHS embedded in our all operations. Other than this, we do support our customers by conducting product safety activities at their workplaces, because we know that within Pakistan we lack in EHS practices when it talks about few sectors like textile, where when we talk about our industry with respect to for example consumer sector, where EHS is not the first priority as we see. So that we are helping them, and especially the local players, we are helping them to establish the EHS system by letting them know the hazard associated with the chemicals. We are telling them and teaching them on a regular basis chemical segregation, especially for the storage, and chemical safeties for handling them, because on and off we have got incident, we have got reports that the people have been affected and impacted by the chemicals within their operations. So this is how we have been here in Pakistan. This is how our management system. So this is all from my side with respect to EHS and in BSF. Okay, thank you very much. Since we are running out of time and already, we can take the questions at the end if we have time. So let me request the next speaker, Mr. Nameer Ahmed, to give his presentation. I would humbly request that to track with the time as well, because we have another very senior speaker waiting for the presentation. So please start your presentation and then you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. I'm Nameer. I'm working at Hino Park Motors Limited. And Hino Park Motors is basically a commercial vehicles assembling and manufacturing firm, and it's a daughter company of Toyota. So, worldwide, Toyota is manufacturing its commercial vehicles under the brand of Hino. In Pakistan, we have two plants. Both are located in Karachi, and then we have our head office in Karachi and area offices throughout the country. And now, with respect to the COVID and its impact, it was a really unforeseen situation, and a situation that the people were never prepared for, and the people never thought about. और बहुत सारे लोगों ने उसका इम्पैक्ट और उसका जो उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ों को बहुत लेट जाना, बट वी वर द वन। आपको याद होगा फेब 2020 में जब फर्स्ट केस आया था एंग्रो कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस लोकेटेड इन हार्बर फ्रंट बिल्डिंग कराची में, क्लिफ्टन में, जो कराची में पहला केस कोविड का लास्ट ईयर फेब में रिपोर्ट हुआ था। At the same day, we issued an advisory for our people. हमने अपने लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज को एक एडवाइजरी और वेरी सेम डे हमने इशू की थी, कि जिसमें हमने एम्प्लॉयज को अलर्ट किया था कि कराची में इट्स द फर्स्ट केस बीइंग रिपोर्टेड और नाउ वी नीड टू गेट अलर्ट। ये पेंडेमिक है और ये फैलने वाली एक चीज है, और इसको देखते हुए हमने बिजनेस एक्टिविटीज को, ऑपरेशंस को भी accordingly manage करना है, and the employees also need to take precautionary measures with respect to the pandemic. और very soon then in the same week हमने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेवल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसको बंद कर दिया था हमने, और उसके साथ साथ हमने जो हमारे वेंडर्स और कस्टमर्स हैं उनके विजिट्स को बहुत मिनिमाइज कर दिया था। ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी कंपनीज ने बहुत महीनों बाद की थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि फेब में ही विद इन लाइक 1 वीक ऑफ द फर्स्ट केस बीइंग रिपोर्टेड इन कराची हमने ये सारे मेजर्स हीनो पार्क मोटर्स ने लिए, क्योंकि हमें उसका इम्पैक्ट हमने समझ लिया था और हमें अंदाजा हो गया था कि आने वाले दिनों में किस कदर एक फैलने वाली चीज़ है। जाहिर सी बात है, एक वबा है, तो उसको हमें अगर कंटेन करना है, अगर हमें उसके स्प्रेड से बचना है, तो वी नीड टू टेक सच मेजर्स।
और इसके साथ साथ ये कि हमने वीकली एडवाइजरीज शुरू की थी। मैं अपने फाइल मेरे पास मौजूद है और मैं उसको सॉफ्ट में भी देखता हूँ, तो हर वीक सिंस Feb 2020 each week we issue an advisory to our employees, और उन एडवाइजरीज में हम एम्प्लॉयज़ को करंट सिचुएशन से भी अवेयर कर रहे होते हैं, सिटी के लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, एंड देन कंट्री वाइड जो सिचुएशन है पेंडेमिक की, और जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है उससे भी अवेयर कर रहे होते हैं, रिसेंट मेजर जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी की स्ट्रेटजी है, कंपनी कैसे ऑपरेशंस को मैनेज करने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम एम्प्लॉयज़ को इससे अवेयर कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, और उसके साथ हम कंप्लायंस पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं कि जो गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है प्रोविंशियल लेवल पे या फेडरल लेवल पे, तो वी नीड टू कंप्लाई विद दोस। और इसका ज़ाहिर-सी बात है, इसका इम्पैक्ट बिज़नेस ऑपरेशंस पे होता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने अगर ये एडवाइज़री इश्यू किया है कि 6 बजे के बाद बिज़नेसेस और फैक्ट्रीज़ आप बंद कर देंगे, तो एक वो ऑर्गेनाइजेशन के जिसके पास बहुत हाई प्रोडक्शन लोड है, कि जिसके बहुत सारी सेकंड शिफ्ट या फिर मे बी ओवर टाइम जहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, तो वो आपने फिर देखना है कि आपने उसको गवर्नमेंट के मेजर्स जो है उनके अकॉर्डिंगली कंप्लाई करना है। तो हम कंप्लायंस पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहे होते हैं एज़ अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीज़न। तो ये चीज़ें थी कि जो हमने बहुत शुरू से नाउ सी एज़ अ कंपनी, एज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने बहुत सारी मेजर्स जो है वो लेने थे आफ्टर द लॉकडाउन। आपको पता है कि मार्च और अप्रैल के वो 2 मंथ्स थे जो लास्ट ईयर बिल्कुल लॉकडाउन में था, कंप्लीट लॉकडाउन था, और उसके बाद जून में आवाज़ रिपीट हो रही है आई थिंक, सॉरी। नहीं, प्लीज सो गो अहेड, तो हम वी कैन हियर यू। जून में, लास्ट ईयर जून में यू नो के ऑपरेशंस जो है वो रीस्टार्ट हुए थे, और उन ऑपरेशंस के रीस्टार्ट होने से पहले हमने बहुत सारे मेजर्स लिए इन द लास्ट मंथ ऑफ मई, और उसमें ये था कि एम्प्लॉयज़ को डेली टेम्परेचर चेक उनका मैंडेटरी है, उनको सैनिटाइजेशन गेट से जो है वो पास थ्रू होना है, और उनको फिर हमने हैंड वॉश फॉर फैसिलिटीज़ बनाई। हमने पोर्टेबल वॉश बेसिन्स थ्रू आउट द कंट्री, हम सॉरी थ्रू आउट द कंपनी प्रेमिसेस हमने लगाए हैं, और वो विद इन द कंपनी उसको हमने जो स्क्रैप मटेरियल होता है उससे हमारे एम्प्लॉयज़ ने उसको बहुत इमरजेंसी बेसिस पे उसको डेवलप किया था, तो वो सारा हमने किया। इसके साथ ये कि जो कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसका प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया है। उसको हमने ये कहा एम्प्लॉयज़ को, हमने थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिया कि इफ यू आर फीलिंग द सिम्पटम्स और इफ यू आर फाउंड विद कोविड पॉजिटिव, आपने टेस्ट कराया है, तो शुरू-शुरू में लोग थोड़ा-सा रिलक्टेंट थे उसको कम्युनिकेट करने में। लेकिन हमने एम्प्लॉयज़ को ये थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिया कि सी ये एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको कोविड फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब ये मे बी बहुत सारे ऐसा हुआ ना कि चलें आपने उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है ना वो बिहेवियर शो नहीं किया, तो उस वजह से आपको लगा। लेकिन बाज़ केसेस में ऐसे हुए कि लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियात की, दे गॉट कोविड। तो हमने एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस दिया कि देखिए इसमें आपने छुपाने वाली या उसको हाइड करने वाली चीज़ नहीं, आप ये कम्युनिकेट करें ताकि उसको कंटेन करने के लिए बेहतर मेजर्स लिए जा सकें। हमने उसका रिपोर्टिंग का प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया है, और उसकी विजिलेंस का भी हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म हमने चॉक आउट किया था लास्ट ईयर। तो एम्प्लॉइज़ हमें रिपोर्ट करते हैं, एम्प्लॉइज़ हमें बताते हैं, और उसके लिए हमने सबसे अहम मेजर जो लिया है वो पेड लीव्स हैं। अदर दैन जो उनकी रूटीन लीव्स हैं, एनुअल सिक लीव्स हैं, हमने स्पेशली कोविड में एम्प्लॉइज़ को नॉट फॉर जस्ट दोज़ हू आर फाउंड पॉजिटिव, लेकिन उसके अलावा जिनको सिम्पटम्स भी हैं और वो हमें कम्युनिकेट करते हैं, तो दे कैन हैव पेड लीव फॉर 2 वीक्स, और वो कंपनी उनको दे रही है। तो बहुत सारे इसी तरीके से देखिए लास्ट ईयर बाज़ हमारे कुछ ऐसे भी ऐसा पीरियड गुज़रा, कुछ ऐसे मंथ्स गुज़रे कि जब हमारे पास प्रोडक्शन टारगेट कम था, और कंपनी वाज़ इन सम फाइनेंशियल लॉस, लेकिन उसके बावजूद थ्रू आउट द पीरियड ये आप समझ लीजिए 1.5 साल का जो अरसा गुज़रा है, हमने कोई ले ऑफ नहीं किया है। हमने अपने किसी एम्प्लॉयी को, और ये भी अगेन ये भी एज़ अ कंप्लायंस, यू नीड टू नो कि दैट गवर्नमेंट ने कोविड ऑर्डिनेंस एक लास्ट ईयर पास किया था, उसको सिंध असेंबली से पास करवाया था उन्होंने उस बिल को। तो उसकी लाइट में, उसकी रोशनी में कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई को फायर नहीं कर सकती, टर्मिनेट नहीं कर सकती ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक।
उसके बावजूद बहुत सी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ले ऑफ्स किए। आई डोंट नो क्यों गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट में। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने ले ऑफ्स किए, हालांकि ऑर्डिनेंस पास्ड है और ये कंप्लायंस के थ्रू आप किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं कर सकते इस पीरियड में। उसके उन्होंने कुछ ऑल्टरनेट तरीके बताए कि अगर कंपनी फाइनेंशियल लॉसेस में है तो किस तरह से आपने मैनेज करना है। सो इस पूरे पीरियड में हमने अपने एम्प्लॉयज को, किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं किया, ले ऑफ नहीं किया हमने। और हमने अपने एम्प्लॉयज को इसके साथ साथ जो अभी ये बात हो रही थी, जो मैडम नफीस बानो बात कर रही थी कि जो एक मेंटल स्ट्रेस और एक जो वो सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी मासेस इस सिचुएशन के नतीजे में, कोविड के नतीजे में लोग हुए, तो उस पर हमने बड़ा फोकस करके हमने मंथली बेसिस पे सेशंस किए, ऑनलाइन सेशंस किए और हमने साइकेट्रिस्ट को, डॉक्टर्स को और सम मोटिवेटर्स, जो लोग ऐसे फैक्टर्स जो हैं उनको हमने एंगेज किया कि जिनके थ्रू हमने एम्प्लॉयज की काउंसलिंग की और उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकालने के लिए हमने उनको टिप्स दी, उनको बताया कि कैसे आप अपने रूटीन को मैनेज कर सकते हैं। स्पेशली लॉकडाउन में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए थे, तो उन दिनों में हमने रेगुलर जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए एडवाइजरीज भी दी और उनके लिए इस तरह के हेल्थ सेशंस भी किए ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। So there तो are some लेजिस्लेशन questions related to what you are saying, that Rajab Ali wants to ask that how does COVID pandemic and online workflow impact on the psychological impact of the employees? So maybe it is related to what you are talking about right now, so you can accommodate this question as well. सी इस वक्त भी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, जो मेजर्स हैं, वो 50% एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम होम, और ये हमारे यहाँ भी हो रहा है और यकीनन सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसको ये लेकर चल रहे हैं 50% एम्प्लॉयज वर्किंग फ्रॉम होम। उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनाया कि कौन 50% एम्प्लॉयज हैं, उनकी कैसे, उनके उन्होंने कुछ स्केड्यूल्स बना दिए हैं, कुछ रोस्टर्स बनाए हैं कि किस तरीके से वो लोग, कौन लोग होंगे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होंगे। विद रिस्पेक्ट टू, देखिए, वर्क फ्रॉम होम ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं। सॉरी टू से, लेकिन मैं ये फील करता हूँ, मैं बीइंग अ टीचर, मैं भी खुद भी फैकल्टी हूँ, मैंने ये फील किया है कि देखिए इफेक्टिवनेस जो है वो उसका मुकाबला नहीं है फिजिकल क्लास से। ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट इक्वल टू, देयर इफेक्टिवनेस इज नॉट, नेवर एवर इक्वल टू दी फिजिकल क्लासरूम्स। इसी तरीके से सेम इज द केस विद दी जो आपका फिजिकल वर्किंग इन द ऑफिस है और वर्चुअल वर्किंग है, इसकी इफेक्टिवनेस इट्स नॉट द सेम, नेवर एवर द सेम। और स्पेशली मैं चूंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से हूँ, तो ये हमारे लिए तो इंतहाई चैलेंजिंग सिचुएशन है। आप कुछ एरियाज ऐसे हो सकते हैं, कुछ वैल्यू चेन एक्टिविटीज आपकी ऐसी हैं कि जहां पर ठीक है आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रेजेंस है दैट मैटर्स अ लॉट, योर प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस इन द कंपनी और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर, तो वहां पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी। लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। देखिए, इस कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, जैसे कंटिन्यूटी प्लान्स। ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स नहीं बनाती थी और उनसे जब कहा जाता था तो उसको सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन इस कोविड सिचुएशन के अंदर वी लर्न कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कितना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी टॉप मैनेजमेंट, वी आर अ जापानीज कंपनी, तो हमने फौरी तौर पे हमें मेजर लेना पड़ा कि जो, और फिर वो वहाँ से जो हमारे जो टॉप मैनेजर दे आर जापानीज, तो वहाँ से भी उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि वो फौरन जो है वो रिटर्न टू देयर होम कंट्री। तो उस सिचुएशन में द टॉप मैनेजमेंट एंड द सी लेवल people are not in the country, they are not physically present, so how and who will be leading the functions, operations को कैसे लीड किया जा रहा होगा, फाइनेंशियल्स को कौन साइन कर रहा होगा, अप्रूवल्स, ये सारी बहुत सारी जो मैकेनिज्म है इन ऑपरेशंस को लीड करना, तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को सीरियस लेना। इसी तरीके से कोविड में हमने फिर वर्चुअल को, बाज ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे ऐसे थे कि जो इससे पहले भी, यानी प्री कोविड भी वर्चुअल उनकी वर्किंग और उनके वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन मेरे ख्याल में लेस देन 1% इन द कंट्री शायद ऐसे होंगे। लेकिन अब कोविड के बाद वी हैव लर्न कि भाई वर्चुअल में आपने कैसे मैनेज करना है। एंड देन वर्चुअल की जहां तक बात है, तो अब अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वर्क फ्रॉम होम की और वर्चुअल वर्किंग की पॉलिसी डिफाइन करें।
एक मैनेजर को, एक सुपरवाइजर को शिकायत ही होती है कि यार मैं उसको कॉल करता हूँ, फॉर एग्जांपल ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, वो जो टाइमली रिपोर्टिंग है वो नहीं हो पा रही है, और जिस तरीके से एक 1-to-1 कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो नहीं हो पा रही, तो देन यू नीड टू चॉक आउट एंड देन यू नीड टू मेक एंड डिजाइन अ पॉलिसी कि जिसमें आप उन सारे इश्यूज को जो आपके जो पैदा हो रहे हैं उस वर्चुअल जो आपके वर्किंग है उसके नतीजे में, तो आप उनको एड्रेस करें, देखें कैसे उसकी, बिकॉज देखिए ये लास्ट ऑप्शन तो है, लेकिन ये ओनली ऑप्शन भी बात सिचुएशन में होता है कि जब आपने वर्चुअल वर्किंग करनी है, यू कैन नॉट फिजिकली अटेंड द ऑफिस, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉइज ये काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अतीब सिद्दीकी ने किया, हाउ डिड द कंपनी बूस्ट एम्प्लॉइज मोरल? इस सिचुएशन में एम्प्लॉइज के मोरल को बूस्ट करना, इसमें सबसे पहली चीज देखिए, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि वो Yeah, we एम्प्लॉइज will take a question in the end after the last presentation. So we have a list of questions. ओके, ये एम्प्लॉय मोरल का जो क्वेश्चन था इसका मैं आंसर कर देता हूँ कि एम्प्लॉयज को जो सबसे पहला कंसर्न था इस पूरी सिचुएशन में, जब 2 months वर इन द लॉकडाउन, तो एम्प्लॉयज बार बार ये कि यार फेयर उनको कि भाई कंपनी क्या मेजर्स लेगी, कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन होती है तो उनको जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज उनको थे, और दे वर थिंकिंग और दे वर कॉलिंग अस अगेन एंड अगेन कि भाई क्या है आपका रोड मैप है, क्या सारी चीजें। तो उस सिचुएशन में उनको कॉन्फिडेंस देने का काम हमने सबसे पहले किया, हमने उनको समझाया, उनको बताया, उनको गाइड किया कि यू नीड नॉट टू वरी कि ये सिचुएशन में एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन द कंपनी स्टैंड्स विद यू, और हम आपके लिए आपको जो है वो आपकी वेलबींग के लिए वी आर स्टिल थिंकिंग, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है ना वो टाइमली गाइड करते रहें। और इसी तरीके से उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि हमने कुछ ऐसे सेशंस रखे, ऐसे डिस्कशंस कि जिसमें दे गेट एंगेज्ड, और उनको ये फील हो कि वो बिल्कुल ही उससे पूरे बिजनेस प्रोसेस से जो है वो कट नहीं गए, बल्कि दे आर इन द पार्ट ऑफ दैट। तो ये सारी चीजें थी। फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि जो एसओपीज की कंप्लायंस है, एसओपीज की कंप्लायंस जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, द एसओपीज दैट आर डिफाइंड एंड दैट आर डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, उनकी कंप्लायंस भी, और फिर जो आपकी अपनी कंपनी वाइड है उनकी, तो उसके लिए हमने अगेन फिर ओनरशिप उसी वक्त आती है कि जब आप एम्प्लॉयज को एंगेज करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमने विजिलेंस डिपार्टमेंट लेवल पे टीम्स बनाई कि जो एसओपीज की कंप्लायंस देखती हैं, और वो हमने डिपार्टमेंट्स ही के अंदर विद इन लोगों को हमने जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स, बास क्रॉस फंक्शनल हमने टीम्स बनाई है, बास विद इन टीम्स बनाई है, तो वो हमें डेली की बेसिस पे रिपोर्ट कर रही होती है। हमने एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट जनरेट की है, और डेली विजिलेंस रिपोर्ट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हमें रिसीव होती है, और हम उसमें कुछ फिर हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं और उसको मेजर। तो हमने पुलिस मैन से ज्यादा हमने जो एक बिहेवियर रखा है वो हमने गाइडेंस का, अवेयरनेस का रखा है, रादर कि आप पेनल्टीज करें, आप फाइन करें, हम लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो ये मास्क पहनना कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप पूरा दिन में जो है वो सारा वक्त मास्क पहने, लेकिन हम लोगों को समझाते हैं कि देखिए ये एक मजबूरी है, और इसमें आपने अगर बेहतर आपने अपने We have to इदारे की comply with the SOPs, and we have to be safe at the workplace at all times, and it's not only necessary for us and for the whole environment and people are working around us. Thank you very much. We would like to hear you more, but we are definitely in a time frame that we have to conclude the live session. So last but not the least, I would request Akhtar Quddus Saab to present about his learnings and expertise about this whole health and safety issue, especially in this pandemic regime. So Akhtar Quddus Saab, may I request you to start your presentation? I cannot hear properly.
Akhtar sir, your voice is not clear. Hello, I cannot hear anyone. साद आवाज आ रही है, आपकी आ रही है, मेरे ख्याल में अख्तर साहब की थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रही है। जी अख्तर साहब, we cannot hear you properly. थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है वॉइस। I cannot hear. कोई और सुन पा रहा है अख्तर साहब की वॉइस को? I think he lost the connection. His internet was lagging actually. He was not audible at all. Okay, by the time he will join again, let's take another question that was posted a while ago. So SZABIST wants to ask that since the operations were halted and the company is in financial loss, talking about HinoPath, how did the company afforded to give its employee paid leave? So you were talking about the paid leave were given to the employees who were in the symptoms or related to that. So let me ask you this question. So briefly, if you can explain that. See, it's a company measure और इसके लिए हमें अपने जो भी हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसके साथ जो मैन पावर कॉस्टिंग होती है उसमें वी नीड टू मेक सम चेंजेस और जाहिर सी बात है वो कंपनी को बेयर करना होता है उस सिचुएशन के अंदर। लेकिन अगेन एम्प्लॉय की रिटेंशन के लिए, एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए, एम्प्लॉय की कमिटमेंट को बूस्ट करने के लिए ये एक बर्डन था कि जो कंपनी ने बेयर किया, लेकिन वी स्टिल डिड इट और इसको कंपनी के एम्प्लॉयज अप्रिशिएट करते हैं। हम वी बिलीव इन आवर कंपनी। देखिए मैं कहता हूँ कि हम कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो बहुत एम्प्लॉयज को कोई बेंचमार्क करते हैं इन द कॉम्पनसेशन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन देयर नंबर ऑफ अदर रीजंस के हमारी जो अट्रिशन रेट है, हमारी जो टर्नओवर है वो बहुत कम है और लोग यहाँ से जब इस कंपनी के साथ एक दफ़ा ज्वाइन कर लेते हैं तो वो बहुत लॉन्गर टर्म बेसिस पे अटैच रहते हैं, एंगेज रहते हैं। उसकी एक वजह हमारा एनवायरनमेंट है and the facilities that we are providing to our employees। तो आप देखिए ना कि मैंने आपको बताया ले ऑफ्स करना एम्प्लॉइज को पेड लीव्स देना इन सारी सिचुएशन के अंदर कि जब फाइनेंशियल ऑलरेडी कंपनी चैलेंजेस में तो फिर ये लोग रिगार्ड करते हैं चीज़ों को और दे रिमेन कमिटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर ऐसी सिचुएशन में फिर जब होता है तो लोग आपको फिर आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में और कंपनी को जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ओके डॉक्टर नफीसा, अच्छा, इस आंसर का मैं भी इस क्वेश्चन का मैं भी आंसर करना चाहूँगा। इसके अंदर कैन यू हेयर मी? यस प्लीज कंटिन्यू।
Yes, we can hear जी, you. इसमें मेरा इनपुट ये है कि देखें, इफ व्हेन वी स्टार्टेड दिस कोविड-19 ना, द इम्पैक्ट वाज डिफरेंट व्हेन द एंटायर प्रोसेस वाज halted. तो उस वक्त तो आप ये कह सकते थे कि देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस लॉसेस एंड एवरीथिंग, but over the time actually this becomes a quite normal. We are you can say settled to this normal norms. अब तो एम्प्लॉय इज ऑलरेडी एंगेज, उसको पता है 50% Yeah. स्टाफ के साथ कैसे काम करना है. सो द थिंग्स हैव बीन एस्टेब्लिश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओवर Yes, द टाइम we all are दैट trained फिफ्टी actually. Yeah. परसेंट वर्क स्केड्यूल पे किस तरह काम होना है. And even the organization has come to a you can say mindset what would be their production target for this year, what would how they will approach toward it. They have already sorted out to cater these issues. तो वो लॉस, फाइनेंशियल लॉस वाले पार्ट से तो हम निकल कर अब एक्चुअल केस पर आ चुके हैं, जहां पर आपको खुद को पता है कि हाउ यू हैव टू मैनेज इट विद रिस्पेक्ट टू. अगर मैं लेबर की बात करूं और वर्कर की और एम्प्लॉय की, तो सबसे बड़ी तो उसकी मोटिवेशन ये है कि इफ यू डू नॉट ले डाउन द लेबर, जिन Yeah. ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया, अपने लोगों को अपने साथ रखा, तो आई थिंक दे हैव एबल टू अचीव दैट सेंस ऑफ. बिकॉज पहला कोविड का जो इम्पैक्ट था वो तो ये था कि द पीपल वर अफ्रेड ऑफ दिस पेंडेमिक और इस डिजीज की वजह से. दूसरा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि लोगों को ये इशू था कि उनकी जॉब सिक्योरिटी वाज नॉट इंटैक्ट. तो जो जिन इदारों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने और प्लेयर्स ने ऐसा इंश्योर, ये चीज़ इंश्योर की कि देयर जॉब्स रिमेन इंटैक्ट, वो सबसे फंडामेंटल था. देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपनी कुछ ने तो अपनी जो एनुअल सैलरीज थी उनको कट डाउन किया था, एंड देयर वर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट इम्पैक्टेड इवन द सैलरीज. उन्होंने अपनी Yeah. Some स्पेशली जो maintain लोअर with the मैनेजमेंट थी उनकी पूरी increments as well. सैलरीज दी. Some हाउएवर maintain with जो whatever उनका सी benefits they लेवल were कैटेगरी थे, दे हैव giving टू to the सेक्रीफाइस employees. their salary portion. So this is how the company had managed and ensured the people remain motivated. But there were a couple of Yeah. questions related to this कि उनके ऊपर मोरल पे क्या हुआ. So this is actually, देखिए, बेसिक मोरल इज विद कनेक्टिविटी विद द ऑर्गेनाइजेशन. हमारा सारा जो एसोसिएशन होता है किसी कंपनी के साथ, लॉयल्टी एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड विद आवर पे स्केल्स एंड द डे टू डे ऑपरेशन. अगर मैं किसी ना किसी तरह डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हूँ, मेरी सैलरी इंटैक्ट आ रही है, तो आई रिमेन विद दैट ऑर्गेनाइजेशन. That you remain जहां मैं ऑपरेशन interested से and कट ऑफ होना शुरू होऊंगा, जहां मेरी yeah. ग्रोथ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कट डाउन होंगी एक एजुकेटेड पर्सन के लिए, और Yeah. सिमिलरली इसे जो वर्कर लेवल है उसकी सैलरी कट डाउन होगी, देन यू विल गेट अफ्रेड. अच्छा, आई Yeah, नीड जस्ट exactly, टू ऐड exactly. वन Thank you पॉइंट. मैं so much. And एक पॉइंट uh, we- yes, please. मैं एक पॉइंट बस ऐड कर दूं इसी में. एक तो ये हमने लीव्स की बात की, एक और जो मेजर था जो मैं डिस्कस नहीं कर सका उस वक्त, गवर्नमेंट ने बहुत इनिशियल स्टेज पे, आई थिंक थर्ड और फोर्थ मंथ ऑफ द पेंडेमिक जो था, उसमें एक और जो डायरेक्शन दी थी कि 55 अबव जो लोग हैं दे कैन नॉट अटेंड द ऑफिस. और ये 7 महीने, ऑलमोस्ट 7 to 8 months ये So रेगुलेशन गवर्नमेंट की रही है. उन 7 to 8 months, अच्छा ये वो हमारा सेगमेंट था कि जिनको हम बहुत ज्यादा वर्चुअल वर्किंग पे आमादा भी नहीं कर सकते थे. आमादा से मुराद ये कि बहुत ज्यादा दे वर नॉट रेडी फॉर वर्चुअल वर्किंग, और उनके लिए थोड़ा सा ये इस सेगमेंट के लिए मुश्किल था. आप yeah, सोचिए actually this 8 months. adaptation was quite challenging for some of Yes, us yes, because but still everyone was ये भी not वो लोग थे. really used to yeah, Yes. this online Now systems. see, 8 months गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 8 महीने इनको भी you just आप समझिए उसको कि 8 months they were sitting at home, they were doing almost nothing, and the government the organization were paying them. तो ये भी एक Yeah. मतलब उनको उनको भी ले Yeah, ऑफ this नहीं is किया, a उनको plus भी point रिटेन that the किया. organization is thinking about the employees. So yes, we have Quddus Sahab back. Akhtar Quddus Sahab, please start your presentation, and then we will later continue with the discussion. Yes, Akhtar Quddus Sahab.
we are still having issues with the voice. जी मेरी आवाज बिल्कुल खत्म है कुछ है Akhtar Sahab, we can hear you now. No, you can hear me. Okay, that's great. Okay, so what I was saying before we were interrupted, okay, मेरा presentation जो है basically focused है on the workplace, and I really loved the way नवीर ने अपने organization के responses बताए. I was pretty much impressed by that. सॉरी कुद्दूस साहब, आपको नहीं सुन पा रहे हैं. Yeah, there is again issue with the voice. We cannot hear you, Akhtar Sahab. Bharat, can we take questions from audience? Yes, I think yes, meanwhile he can fix the issue. Can we take questions? Okay. Okay, so there is a question related to Aman Health Services, that Aman is currently short of medical resources
and obviously there is a hike in COVID cases. So something, tell us something about if, God forbid, something bad started to happen and the pandemic spreads more. So what will be the strategy for Aman, and how would you tackle the situation? सो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ऐसा है नहीं करंटली, ना तो अमन के पास But there is a fear among people because we are hearing and watching that on television and other sources of information. Yeah, तो अमन इज नॉट शॉर्ट ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज करंटली ना। तो एक्चुअली हमारे पास जो इशू है वो एक इशू है, और वो ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस जो है वो शॉर्ट है। जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली एम्बुलेंसेस नहीं है। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारी जो एफिलिएशन है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज प्लानिंग टू गिव मोर फंड्स टू द अमन हेल्थ केयर टू कोप विद दिस सिचुएशन। तो उसमें हमारे पास अभी जो फ्यूचर प्लानिंग में आ रहा है कि मोर देन 200 एम्बुलेंसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी जस्ट ओनली फॉर कराची। और इसी तरह सिमिलरली हमारे पास मोर देन 350 एम्बुलेंसेज जो है वो और प्रोवाइड की जाएंगी फॉर रेस्ट ऑफ द सिंध। तो इस तरह से हमें फिलहाल भी अभी भी कोई मेडिकल रिसोर्सेज की कोई शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ एम्बुलेंस का नंबर कम होने की वजह से समटाइम्स हमें प्रॉब्लम होती है, लॉजिस्टिकल इश्यूज आते हैं। या तो जहाँ तक अल्लाह ना करे इंडिया वाला सिनेरियो को तो हम फोर्स ही नहीं कर रहे, और ना ही ऐसा, जी बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल रिसोर्सेज की कोई शॉर्टेज। Okay, thank you. That's good to know actually, because some people really have that kind of fear that if it is happening in neighboring countries, so God forbid it can happen it here as well. So yes, we are again back with the Akhtar Sahab. Akhtar Sahab, if we can hear you, you can start your presentation so that we'll be able to conclude the session. Next questions. And you share. So can I answer the next question? Yes, and healthcare workers at the front line are limited resources during COVID. HSC conditions were difficult for them. Do you agree with that? And how was Aman Services coping with that pandemic? For your own Yeah, I agree कि initially जब in the beginning of the pandemic तो ये वाला इशू बहुत ज़्यादा था कि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गई थी, जिसमें स्पेशली जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनकी शॉर्टेज हो गई थी कुछ इलाकों में या कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर। तो उसमें हम लोगों ने किस तरह से कोप किया, उसमें ये हुआ कि हमारे पास एक हमारा विमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोग्राम हमारा रन हो रहा था, जिसके अंदर हमने जो है ना उसमें जो है इंटर पास लड़कियों को इंडक्ट करके उनको मुख्तलिफ स्किल सेट सिखाए थे। उसमें एक स्किल ये था कि वो जो है स्विंग यानी कपड़े सीना, स्टिचिंग करना, एक उनकी ये स्किल हमने उनकी डेवलप की थी। तो उस स्किल के थ्रू हुआ ये कि ड्यूरिंग दैट टाइम जब शॉर्टेज हो रही थी तो वो पूरा जो हमारा ग्रुप था, काफी सारी उसमें लड़कियां थी, उन्होंने फौरन स्विच कर दिया कि उन्होंने मास्क और ये जो सूट्स होते थे ना वो बनाने शुरू कर दिए थे। तो जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनकी एफिलिएशन थी तो उन्होंने उनको फौरन स्विच करवा दिया था कि वो वहां बैठकर वो सीना शुरू कर दिए थे उन्होंने, और हमारे लिए वो चीज़ हमने उनको परचेज कर ली थी। तो इस तरह से एक तो वुमेन एम्पावरमेंट में हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दी, दूसरी तरफ हमें जो है वो PPEs की कोई शॉर्टेज नहीं हुई थी। Yeah, exactly, because in the start of the pandemic especially we were having issues with availability and the manufacturing of that PPEs. आफ्टर दैट फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बाद तो मतलब काफ़ी जो कंपनीज थी और जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स ने बल्क क्वांटिटी में बनानी शुरू कर दी थी, और उससे पहले ये हुआ था कि इम्पोर्ट हो गई थी, तो उससे बल्क क्वांटिटी में इम्पोर्ट हो गया था, फिर इसके बाद लोकल मैन्युफैक्चरर ने बनाना शुरू कर दिया। तो अब तो कोई ऐसा नहीं है कि हमें
health and safety Yeah, there environment is क्या no होते हैं? peace related, so we cannot have any shortage of the अभी तो medication. कोई ऐसे shortage नहीं है. Okay, great. Okay, so we are about to conclude the session. Let me try it once again before concluding the session. If we can have, audible presentation from Akhtar Saab. Akhtar Saab, can you start the presentation so we can know that if we can hear you? And I hope this issue is fixed by now. Akhtar Saab, can you hear us? जी आ रही मेरी आवाज? Yes, you are audible now. I think there was a problem with the Okay, good. Yes. Well, already we are running out. I think हमने घंटे के ऊपर 1.5 घंटा तो ऑलरेडी हो गया है. So I'll try to make myself brief. मैंने जैसे पहले कहा था मेरा कॉन्टेक्स्ट वर्कप्लेस के हवाले से होगा ज्यादा और Yes. उसके हवाले से जो मैं डिस्कशन कर I'll skip the historical Your voice is again lagging. We are so sorry we cannot hear you.
Sir, there is some serious problem, I guess, because we are not able to fix the voice issue, and the presentation is not audible. Okay, one thing we can do is that since we already have to switch to another session, so which is actually related to the follow-up of this discussion that we are having on the live stream, and also the students' presentations that already has been prepared. I would suggest, if everyone allows me, so if we are having troubles in hearing him right now in the live streaming, maybe we can switch to that second session, and then we'll continue our discussion, and followed by the presentations prepared by the students. Maybe this problem can fix in that that closed session, maybe, if everyone allows me. So I would suggest this. So all panelists are humbly requested to switch towards the second part of the session, which is, which has a different link, and we have already shared that with you all. This is a humble request that we can continue this session in that closed meeting, and we can have the rest of the content that we could not hear right now. With a sincere thanks, and we are really grateful of your interest, your time, and the learned content that you have shared, and you have a lot of expertise and experience in the domain that we can learn from. We would really thankful and grateful that you would join in the second session, and we will definitely share that recordings and the other materials that we can share. So thank you very much for now. Now we can conclude this session, and you are most welcome to join in the second session. Thank you so much. Thank you. So we have to leave this? Yes, you have to leave this session and then join the other session with the different link.